So if we classify neurons, there are two ways of classification. और पहला वाला है according to function. So let's go through that first. ठीक है? So you have sensory or afferent neurons, the ones right here, which carry impulses from sensory organs to the brain or spinal cord. Then you have the motor, yeah, efferent neurons, the ones right here, and they carry impulses from the brain या spinal cord towards your effector organs. अब effector organs क्या होते हैं? इसमें glands भी आ सकते हैं, आपके muscles भी आ सकते हैं to cause movement या release of hormones. And then you have autonomic motor neurons. ठीक है ना? This is basically a sub classification of motor neurons या efferent neurons. और autonomic motor neurons जो हैं basically autonomous मसल्स की तरफ इम्पल्सेस लेकर जाते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स इन आवर हार्ट या स्मूथ मसल्स इन आवर गट या सर्टेन सर्टेन ग्लैंड्स लाइक द एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि ऐसे पार्ट्स होते हैं ऑफ आवर बॉडी जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं. एंड देन यू हैव सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स व्हिच कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं. एंड देन फाइनली यू हैव इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो कि आपके afferent और efferent न्यूरॉन्स के दरमियान में एज अ लिंक सर्व करते हैं. And that's why they are also known as relay neurons, and they are present in the central nervous system, specifically in your brain and spinal cord. ठीक है? So they connect the sensory and motor neurons. ठीक है? So sensory neurons में आपकी cell body is inside the central nervous system at the side with no dendrites. ठीक है? Your dendrites are long, they are outside the central nervous system, and they make synapses with receptors because why we are talking about sensory neurons. ठीक है? Axons are short and those axons are found inside the CNS, and those axons form synapses with interneurons or other neurons just in the CNS. ठीक है? And functions में they transmit pulses from receptors to the CNS. फिर interneurons are found inside the CNS. इनके dendrites are short and are found inside the CNS, and they synapse with other neurons such as the sensory neurons. ठीक है, इनके axons भी short होते हैं, they are also inside the CNS, and they synapse with other neurons such as the motor neurons. ठीक है, and they connect the sensory and motor neurons to form a nerve circuit. And then motor neurons are found outside the CNS at the terminal with the dendrites. ठीक है, so they are short. इनके जो dendrites होते हैं वो short होते हैं. Those are found inside the CNS and they synapse with effectors. And their axons are long. So basically, motor neurons are just opposite of sensory neurons, and they are outside the CNS and in effectors. And obviously, their function